Okay, all good, I guess so. So let's start solving Striver SD sheet. Wait, let me just put it on my story so that कोई आ जाए. Okay, so I guess सब सही है अब. Okay, so let's start. Where's my first question? Here it is. Yes, so I have solved it previously. Given array nums with n object colors red, white, or blue, sort them in place so that object of same color are adjacent with the colors in the order red, white, blue. So basically, we are given 0, 1, 2, and we have to simply sort them. You must solve this problem without using library sort function. Okay, so we are supposed to solve this question without using sort function. All right. So what's the basic naive approach I can think of right now is just count 0, 1, and 2. So and count 1 equals 0, count 1 equals 0, count 2 equals 0. Sorry, C0, C1, C2. All right. Now for auto x in nums, if x equals 0, C0 plus plus, else if x equal 1, C1 plus plus, else C2 plus plus. So now we have the count of all zeros, all ones, and all twos. Now what we will simply do is just run a for loop for int I equals 0, I less than, first of all we have to put all zeros. So our loop will run from I 0 to I uh, C0, I plus plus, and it is void, so we have to just update our array instead of like creating a new array. So simply we just nums of I equals 0, first loop. Now we'll run one more loop for int I equal. Now since we have put all zeros together, now it's time for ones. So what we'll do is just I equal C0, I less than C0 plus C1, I plus plus, and nums of I equal 1.
And one more for loop for int I equal c0 plus c1, I less than c. uh, till what place, let's say, let me just uh, 0 0 1 1 2 2 2 2 2 4. Okay, c2 I plus plus Thanos Tiwari n. I don't think so. Like, since there are two twos, then we have to run loop for 4 to 6. So I guess this should work. Nums of I equal to, and yeah, fa. Oh shit. Let me see if this works. Uh, okay, wrong answer. So output is 001110. It's putting one three times. I equal in case two. Like, it's putting extra one, and instead it's not putting two in my array. So let's see what's the error here. Since there are two zeros, what I can do is um, c0 plus c1. If I start my array from 0 0 1 but and c2. Okay, like I have to add c0 plus c1 plus c2. Now will this work? Okay, okay, and C2 is the count, it won't specify the index exactly. Yes, sir. Instead, if I can write here num dot, wait a second, num dot size. So that would also run, I guess, if I'm not wrong. Yeah. Will it get accepted or not? Accepted, okay. But this is the brute force approach. Like, the time complexity for this is first of all big O of n for this. Then this would also contain big O of n, so it's big O of 2n. So yes, I've heard of Dutch national flag algorithm. Let's try that. But I have to recall it like till it's, let's suppose 0000. Wait a second. 0 0 0 1 1 1 1 1 1, and here comes the unsorted part. Wait a second. 2 1 0 2 0, and then comes the sorted part again. 2 2 2 2 2. All right. Dutch national flag sticker, take 3 pointer. Exactly, yes, I'm optimizing it using Dutch national flag algorithm. But I have to recall it like till what point we have to take high, mid, and low pointer. So first pointer will take low as 0, and the high will be
n minus 1, and I 0 को पॉइंट करेगा, J 1 को पॉइंट करेगा, K 2 को एग्जैक्टली यस. I can recall, I guess. But let me see. Like this is unsorted part, the rest is sorted. So okay, let's int low equal 0, high equal num dot size minus 1, and mid will also be 0. Like this is an hypothetical array, if I'm not wrong. So mid will also be 0, right? Now will now while uh, what would be the condition for while loop? I can't recall. Mm, it's will it be low to high or mid to high? I guess mid high. I guess mid high. Mid less than equal high. No, I just have to swap. So there would be three condition. If nums of mid equal 1, this will be first condition. Second condition will if nums of mid equal 0, then this would be my second condition, and else there will be my third condition, right? Do the dry run. Wait, but like I can do it without dry run because I'm aware of Dutch national flag algorithm. Let me try this. If I'll get wrong answer, then I'll dry run for sure. Okay, so we have now three condition. Like we know, if the element at my mid is 1, then I need to do nothing, just increase my mid pointer. So let's check the array. 2 0 2 1 1 and 0. Okay, so this is my okay. So while mid high, if bro, please don't write code. Let me try it myself. Uh, Let me solve it. Okay, so if it is 0, then we just simply swap nums of mid. Oh, bro, come on. Nums of mid with nums of low, and we have to update our low to low plus plus, and we also have to increase our mid. Okay, now correct by. Okay, let me try. And if it is true, then we have to swap it with the last element. So if it's just swap nums of mid with nums of high and high minus minus. Here will not update mid because it is possible like last element could be 0. Then we have to check 0 again. So yeah. So that's it, I guess. Let me submit this.
Okay. Let me see if it's accepted. Fa. Bro, what? Oh, I guess I have to use else if. Will it get accepted this time? Okay, yes. Okay, so done. Sort color is now done. Our next question is stock buy and sell. Oh, it's a DP problem, but I have to solve it using brute force itself because I'm not doing DP right now. Okay. Swastik sitting district D में. Yes, like bad to wrong, but like I'll be out in first round. पहले round में ही बाहर होना है मुझे. ऐसा एप्टीट्यूड की तैयारी बिल्कुल नहीं करी मैंने, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. आप बताओ, आपने कुछ पढ़ा है इसका डिस्ट्रिक्ट डी के लिए एप्टीट्यूड वगैरह, या फिर बस ऐसे ही बैठ रहे? Okay, stream quality is excellent. Okay, let's see this question now. Okay, all right. So you are given an array prices, when prices is the price of given stock on that day. Okay. You want to maximize the profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Uh, Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. You're like, I know this question. No, I only know DSA, name of skills, no dev, no nothing, no aptitude, no CS fundamentals. Exactly same situation, by. Like even I'm trash in DSA too. Like I'm not that good in DSA. इसलिए मैं like I'm targeting for companies which will come after August, so that I have a time of something around 1 month, so that I can prepare accordingly, like CS fundamentals, development basics, and all. District is off campus, no, but it's on campus. It's coming to a campus. Okay, like 715364. Okay, like this is a basic question. If I'm not wrong, let me. Best by equal prices of zero. We'll assume like the current price is the best buy price, and max profit equals zero. Or we can also assume int min, but no. Dev कहाँ तक करिए आपने ब्रो? सर बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर बार मैं एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट करता हूँ, हो गया, आगे मैंने नहीं किया कुछ. थोड़ा बहुत मर्न स्टैक किया था, बट मुझे ना भूल जाता है. मैं ट्यूटोरियल्स देख के तो समझ में आ जाता है, बट मैं भूल जाता हूँ बार बार. अगर मुझसे कोई क्वेश्चन दे देगा ना, एक फॉर्म बनाओ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ एच टी एम एल से जावास्क्रिप्ट से, कुछ नहीं कर सकता मैं. आई एम दैट ट्रैश इन डेवलपमेंट. घर पर नहीं, आज बात पे वो भी कर रही क्या? बस भाई. भाई पता नहीं, शुरुआत से मेरा कभी मन नहीं लगा डेवलपमेंट पे. हमेशा मुझे डीएसए करने में मज़ा आता था, हालांकि डीएसए भी नहीं आता, बट मज़ा आता है करने में, लीड कोड वगैरह राइट करने में. नेक्स्ट for okay, enough yapping now. Let's get int I equals 0. I let, oh, we'll take I 1. What happened, bro? Come on. DSA development, exactly why.
Exactly, same condition, same situation. Okay, so what we have to compare, like we are on 1. If if 1 is greater than 7, only then we'll get profit. So will that work? If prices of I is greater than best buy, then we'll have to write something. Okay, so what can we do here? Minus best buy. Okay, then we would simply just update the best buy equal minimum of best buy comma prices of I. Okay, stream quality is okay, excellent. Issues. Then what we would simply do is we have to return max profit. Return max profit. Let's see if this works. Okay, please bro get accepted. Okay, let's go. Like I'm not attempting it using DP. Like as of now, not. Okay. Finally, day one of arrays completed. Now let's move day two. Rotate matrix by 90 degrees, bro. I hate matrix. Okay, I've oh, bro, please get a reset. Okay, finally a matrix question. So we are given an n cross n 2D matrix representing an image. Rotate the image by 90 degrees. Like we have to rotate it by 90 degree. 1 2 3 becomes 1 2 3. 4 5 6 becomes 4 5 6. 7 8 9 becomes 7 8 9. All right. So what we can do right now is like how to approach this question using brute force. Well, let's visualize this. Like first of all, I 0 and 0 is becoming 0 3. Okay. Next, then we are talking about our first row and last column. Okay. And 0 zeroth row second column is converting into first row and third column. Similarly, like 3, element 3 is on zeroth row and third column, which is being converted into what? Converted into second column and sorry, second row and third column. Okay, so this is what happening, and we have to find pattern inside this.
So similarly, it is happening for this row and this row. Okay. So what can we do right now is, mm, like here row is same and here column is same. So like let's create a matrix. Like, how do we create a matrix? And answer matrix of size n n, and let's define n here in and n equals to matrix dot size. Network quality good. If you are taking 0 0, shouldn't it be 0 2 if you are starting from zeroth? Wait a second, bro. If I'm starting from 0 0, like it's my first element or first row, and it is converting into the same row, but column is converted into 0 2. Oh, bro. Sorry, bro. Sorry. Thank you, bro, for pointing out my mistake. Okay. Now I think that's okay. Same from here. 0 2. Okay. Okay. Is that correct? Like, chat, can you please let me know, like, is that correct transformation? Am I okay? Let's for int I equals 0, I less than n, I plus plus. This would be for row. For int j equal 0, j less than n, j plus plus. Now we just have to swap elements. So swap 0 0 को हमको swap करना है 0 2 से 0 2. So swap. Uh, sorry, we don't have to swap. We have created a new matrix, so we have to put on that matrix. So answer of like 0 2, zeroth row, second column, I j equals matrix of okay, matrix of like row is same nahi, column will remain same. Like, how do we convert this, bro? 0 0. uh what to do now? Am I doing something wrong, or I'm in right direction? Can anyone in the chat please let me know, like, am I in the wrong direction? Brother, you have to make changes in the same matrix. Brother, like, I'm trying brute force. I've created new matrix and I'm not swapping elements. Like, I guess that is the optimal way of doing this question in the same matrix, but I'm trying brute force. So that's why I've created new matrix. But like, I'm not sure about how to convert that conversion
How is transformation happening between elements? That so let me analyze the first is row is every time increasing. Let me look at here. Rotate matrix by 90 degrees. Uh, brute force. So in a 90 degree, each rotate moves from its original position to a new position. ठीक है. The first column becomes the first row. Okay. Second column becomes second row. Okay. Okay. We can simulate this movement by using knee matrix. For each element at position I, j in the original matrix, we calculate its new position in the rotated matrix j and n minus I minus 1. Oh, okay. Okay, got it. Like we have to convert. As you can configure something like I plus 2 or something like that. Yeah, bro, I got that. Like it's bro, do transpose the matrix and reverse every row. Bro, I remember that thing. Like I guess that is the optimal approach for doing this question without using extra space. But like for now, I'm trying brute force. That's why I'm using this answer matrix. First of all, let me solve it using brute force only. So that okay, like what is happening? N minus I minus 1 to convert last. So that would be N minus I minus 1 for last, and here it will be J if I'm not wrong. And we would but but since it is void, like we don't have to return new function. So what should I do now? I'm confused a little bit. What should I do now? Like row column, but row is in. Uh, but like oh I, but that is remaining same every time. I guess wait, let me submit this first so that I could see errors like huh. Okay, wait, let me vector of vector int answer of size n comma vector int of size n, so that way we can. Guys, please do subscribe. Thanks, Ujjwal, for this favor. I'm saying flavor. Okay, so output is 789456123. Wait a second. Let me see this. 789. Like it's doing opposite. Like पहली column को row में convert कर रहा है. I guess I have to write J here and I here. And now let's run this. Okay, all right. Let me see if it gets accepted. Oh, let's go. Like I know this is not the optimal solution, but yeah.
I'm happy that someone in the morning is there to motivate me. For real, bro. Hello, bro. I want to go to Java. Yes, bro. You can go. Like you can learn Java, bro. Please, net, नेट आ जाओ भाई. मत करो स्ट्रीम के टाइम पे ऐसा. Okay. Sorry for the pause, guys. Network issue. Okay, like I'm not trying the optimal solution for this cause I'm literally unaware of the optimal approach. Like bro said, do transpose then reverse matrix. Okay, let's try. Let's give it a try. Like as bro said, what bro told me, bro, do the transpose, do transpose the matrix and then reverse every row. Okay, so this was the okay, optimal approach. Do transpose and then reverse every row. This is what bro told me. Reverse every row. Okay, got that. Now let's see. Now let's see if that works. Like how to do transpose, bro? Like I literally don't know how to transpose a matrix in CPP. पर मुझे फर्स्ट जॉब तो करनी पड़ी ना, उसके लिए क्या करूं? लाइक पर मुझे फर्स्ट जॉब तो करनी पड़ी ना. वैसे 1 साल का गैप होने वाला है. उज्जवल प्लीज आंसर. आई डोंट नो व्हाट टू आंसर. Rows, columns, create a new matrix with swap time. Like I don't have to create new matrix, bro. I have to do it on that matrix itself. Can anyone please give me some hints to solve this question without using extra space? Like I literally am blank. Like how to solve this question without using extra space? Or should I just watch a tutorial by Striver? Or repeating? Can anyone in the chat please guide me or give me some hints to solve this question without using extra space? Because I'm literally blank. Like how to solve this question without using extra space. Um, mm, I guess I have to move on to next question for now, but I'll mark it as done because I've done using brute force. Next question is merge overlapping sub intervals. I genuinely hate this question, but now I had to solve it. I had to solve this question. Merge intervals. Given an array of intervals where intervals I start I and I merge all overlapping intervals, return an array of the non-overlapping intervals that cover all the intervals in the output. Okay. भाई जो भी लाइव पे हो ना प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना. हालांकि मैं कहता नहीं हूँ ऐसा, बट आई एम सेइंग इट फर्स्ट टाइम. चलो लेट्स
Get started. What language do you use? Like you're asking me or you're asking Ujjwal? Like 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15, 18. Bro, in like lead code, etc., I use C++. Even though I know Java a little bit, but I basically use C++ in all my coding stuff. And if we talk about development, then I'm trash in development as well, but I'm learning Merge stack instead of Java. But I know Java is better because in industries, Java is used a lot. Java से ही DSA कर लो क्या? हाँ कर लो. Good option, not a bad option. Like DSA किसी से भी कर लो, Java से कर लो. You can either use C++ or Python or whatever you want. Instead, nowadays I've heard that Golang is a crazy language to learn. Well, enough yapping. Let's get started to this question. 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15, 18. Like, okay, like I have these much intervals. Okay. Okay. Now, what to do here? 1, 3, 2, 6. 2, 6, 1, 3. So it will become 1, 6, 8, 10, and 15, 18. All right. Is the stream quality good? Yes, it's good. Okay. कितना जावा सीख लूँ मैं कि लीड कोड कर दूँ ब्रो फॉर लीड कोड लाइक you just need to learn about syntax of java and how to use for loop, while loop, conditional statements, functions, and basic stl. Like I don't know if there is stl in java or not, but yeah, these are some basics you have to learn. Then you can go with lead code. You can start lead code. Like when you will start lead code, you'll solve some basic problems that will require uh, mainly what mainly your loops, functions, conditional statements, and etc. You can better you watch a one shot for java. Like I guess Shraddha ma'am has created a one shot for java, if I'm not wrong, of 2 or 3 hours. You can watch it in 2x. There is, it's called java collection library. हाँ सी प्लस प्लस में तो एच टी एल होता है बट एज थैनोस तिवारी सेड लाइक देयर इज जावा कलेक्शन लाइब्रेरी एज वेल, so you can have a look on that as well. Okay, so let's try solve this question. Merge intervals कौन से ईयर में भाई? मैं थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर. लव अबर की जावा डीएसए सीरीज निकाली है. कर लो फिर अगर करिए तो. You can do that. Upworks word, you are doing great work. Thanks, buddy. Thanks a lot. That genuinely means a lot. Like these kind of appreciation messages motivate me a lot. मैं भी लीड कोड स्टार्ट करूंगा यार ब्रो. गो.
Go for it, you can do it. जब तक सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड करते रहो. जब तक सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन. ओके. कैसे रहे आपके 3 साल, कुछ टिप्स दे दो. मैंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है ब्रो. फॉर टिप, जस्ट फोकस ऑन डीएसए डेवलपमेंट कोर सब्जेक्ट्स. हो गया. फर्स्ट ईयर में हो देन लाइक यू हैव एंजॉयड अ लॉट आई गेस. फोकस ऑन डीएसए एंड डेवलपमेंट इक्वल. प्लीज़ प्लीज़ डू डेवलपमेंट एज मच एज यू डू डीएसए, बिकॉज ये गलती मैंने करी. मैंने अपने बीटेक में डेवलपमेंट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया एंड नाउ आई एम सफरिंग. हाँ. गो फॉर सी एफ फॉर श्योर. कोड फोर्सेस ज़रूर करो. दैट विल लाइक, इफ़ यू वुड आस्क फॉर एन एडवाइस, देन जहाँ जहाँ आपको कॉन्टेस्ट मिल रहा है, गो फॉर इट. बी इट कोड फोर्सेस, बी इट कोड चेफ, बी इट गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, सब जगह कॉन्टेस्ट हो. सब जगह कॉन्टेस्ट हो. बेस्ट एडवाइस. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड टेक्निकल इंटरव्यू एज वेल. कॉन्टेस्ट में बैन हो गया हूँ, क्या करना चाहिए ब्रो? लाइक परमानेंट बैन और 1 मंथ बैन आई गेस. हाँ, चीटिंग करना बंद करो. डेवलपमेंट में तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया. हाँ, सही बात है. वो ऐसा होता है ना, मन नहीं करता कुछ लोगों का डेवलपमेंट का, कुछ लोगों का करता है. मेरे बहुत से दोस्त हैं क्लास में, वो आर लाइक गोट इन डेवलपमेंट. परमानेंट बैन. बेटर मेक अ न्यू आईडी. better make a new id if you have not solved a lot of questions on your that account. Okay, so like as someone told me, like check if second element is greater than or not than include. So for that I guess we have to sort first of all. So sort intervals dot begin dot. मैंने तो चैट जीपीटी से बनवाया था प्रोजेक्ट. हाँ ब्रो, लाइक और ये ऐसी एडवाइस मुझको बहुत लोगों ने दी है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह आप एआई से बनवा सकते हो, बट इंटरव्यूज़ के टाइम पे, अपने प्लेसमेंट्स टाइम पे आप उनको अच्छे से पढ़ लो. लाइक यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछे. सो या दैट मेक सेंस. भैया मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है. मैं रोहित नेगी से कर रहा हूँ. अभी मैं बाइनरी सर्च पे पहुँचा हूँ. क्या अभी भी क्वेश्चन बनने में दिक्कत आ रही है? हाँ, लाइक इट हैपेंड विद मी एज वेल. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डीएसए in my second or third year, I learned from striver. So in starting of like when I solved 50 questions or 100 questions on lead code, मेरे को भी तब उस टाइम बहुत दिक्कत आ रही थी. प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. लाइक स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस एंड लाइक कोड कॉपी पेस्ट करना मत करना. इफ़ यू आर डूइंग इट, अवॉइड. इससे बहुत लैग होते हो, फिर आप पीछे बहुत चले जाते हो. लाइक मैंने शुरुआत में बहुत कॉपी पेस्ट किया था. लाइक आई वॉच लेक्चर, हाँ मेरे को समझ में आ गया, लेट्स कॉपी द कोड एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर आई एवर मेड इन माय बीटेक. So yeah, I would request you, I would advise you to not do this. Learn concept, implement on your own, debug, again implement. That's how you learn. Entry level जॉब के लिए कितना डीएसए लगेगा? बेसिक लेवल एरे स्ट्रिंग लिंक लिस्ट, दैट्स इट. इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड. कोडिंग से ज़्यादा लॉजिक पर ध्यान दो. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. Okay bro, enough yapping. Now Ujjwal will answer all your queries. Let me focus on this question. ऐसा देख. Okay. You just need projects in your resume. They don't ask the code like how did you code it. Instead they ask about technologies like why did you choose this technology, and basic fundamentals would do. Exactly why. Exactly. Okay, so let's create
vector of vector answer. Okay, I've created an answer now. And now since I've sort, तो फिर sort इसमें कैसा होता है, लाइक पहला एलिमेंट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होता है सब में. इफ अगर वो सेम होता है तो फिर दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं ना. कौशल शर्मा ब्रो, मैंने एक जेंगो का इंटरव्यू दिया था, उसने तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट कोड खुलवाया था. टीसीएस प्राइम इंटरव्यू एंड दे डिडंट इवन बोदर लुकिंग एट माय प्रोजेक्ट्स लोल. हाँ ब्रो, लाइक हर तरह के सिचुएशंस होती हैं, बट लाइक समटाइम्स इट हैपेंस कि वो आपका कोड खुलवाते हैं, आपसे एक पर्टिकुलर कोड स्निपेट लिखने को बोलते हैं, समझाने को बोलते हैं. समटाइम इट हैपेंस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट आस्क फॉर कोड्स, दे ओनली आस्क फॉर लॉजिक्स एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज यू यूज, एंड what extra what extra can we do it, ऐसे कुछ questions. मेरे CG पे like something around 8 I guess if I'm not wrong. Okay, so हमने आंसर बना लिया. अब since like पहला एलिमेंट तो अपने आंसर पे रहेगा ही, so what I will do is simply answer dot push back, and what will I uh, intervals of 0 maybe this. शुरू में इजी क्वेश्चन करो लीड कोड के या जीएफजी के, और कहीं के भी. लाइक आई वुड सजेस्ट स्टार्ट कोड शेफ फर्स्ट, solve basic 500 rated problems on code chef that will help you in building basic logics, then start lead code or geeks for geeks. Okay, now for int I equal 1, since we have included the 0th element, so we'll start from 1. I less than intervals dot size I plus plus. Okay, so the first condition that I guess Kaushal told me, compare their first and last element. So, but but we also have to check like what our answer array include, answer vector of vector includes, because we also have to compare it from our answer. So, if at any point of time intervals of I 0, because we are okay. Wait, int start equal intervals of I of 0. Okay, and our end will be intervals of I of 1. Okay, so now if at any point of time our start is less than equal to what our answer contain at back, answer dot back, answer that back का last element of 1.
So if this happens, then we'll update that answer dot back uh, 1 equals, that will contain the maximum of, like what it is, it is this comma end. So this should work. But if it is not like that, then what we would just simply do, like answer dot pushback. Now what will push back an answer? The interval of I. Okay. Mm, so that's how it works, and we would simply just return our answer. Now, is this correct? Let me just run this to debug this, like what errors have I made. Fa the answer dot pushback. Huh? Oh, fuck, whatever. Like that, that itself. Okay, accepted. Let's go. If this gets accepted first time by, come on, भाई. पहली बार में हो गया. Although its time complex, it is. I don't know if it is optimized or it's brute force. Like as Kaushal told me to compare, I've just compared. Like, let's see the best solution. Oh, that's the same approach. Zero. That's the. So what is the time complexity for this? Let's analyze. Like since we are sorting it, the time complexity will be n log n for this, and then we are traversing singles, so big O of n. So overall time complexity will be big O of n log n plus big O of n. Uh, this will be the time complexity if I'm not wrong. And space complexity, like we are using an extra vector of vector, so big O of n. All right. So yeah, I've done this question. Let's submit this. Sorry, I've submitted it. Okay. So merge interval is also done. Now we have question merge two sorted arrays without extra space. Is that the question? No. Like it's simple merge sorted array. Like I've solved it before, but I guess I have solved this a year ago if I'm not wrong. Yes, 13 August to 2025, almost a year. Ujjwal Singh, how much does it cost? What cost? When did you give your infosys assessment? Okay, you're asking Ujjwal. Let me have a sip of water.
Okay, so I'm back again. Okay, stream quality excellent. All right. So yeah, merge sorted array. You are given two integers num1 num2 sorted in non-decreasing order and two integers mn representing the size. ठीक है. Merge nums1 and nums2 in single array sorted in non-decreasing. Bro, why they write always non-decreasing? Simply they could write increasing order. Okay, the final sorted array should not be returned. Okay, it's void function, but instead stored in array nums1. Okay, but like we have to merge and sort and then update nums1. All right. Okay, so let's try brute force plus use extra space. So we would create a vector of int or an array. Now, since they are sorted, then we just have to compare and fill the array. Okay, so for or no, we can use while loop. Not fi- I'm learning DSA for the first time. Striver DSA is good for beginner. Yes, bro. No doubt, like undoubtedly, you can learn from him. Okay. So while what will you do? What will be the condition for a while loop, bro? I'm trash. I'm totally trash. Bro, how many questions are you solving every day? Bro, it depends like how much I set for DSA. Like on an average, 2 to 3 questions per day. Yeah. ड्राइवर शीट के इजी कर लूँ तो लग जाएगी एम. So let's take a int left pointer equals 0 and right pointer equals 0. Now while left is less than the m and uh, right is less than n. Okay, we'll first compare if nums1 sorry nums1 of left is less than nums2 of right, then we would put if array of ind plus plus equals nums2 sorry nums1 of left plus plus. Let's create one more index ind equal 0. So yeah, so else if that's not the case, then what will we do? We will simply array of ind plus plus equals nums2 of right plus plus. But there is a possibility that some elements are still there because size is not constant. So for that, what we will do is check while left is less than m, simply just array of ind plus plus equals
nums 1 of left plus plus, and while right is less than n, array of index plus plus nums 2 of right plus plus. So this will merge them into a third array, but now we don't have to return, like we have to store it inside nums1. Is the stream quality good? Yeah, that's good. एंड मेरा एक बेसिक डाउट है कि आप लोग नोट्स कैसे बनाते हो, डीएसए के, या बनाते नहीं हो? बनाते थे भाई, लाइक बनाए हैं, काफ़ी नोट्स बनाए हैं। बनाने के लिए आपको सिंपली लेट से क्वेश्चन है, कोई यही क्वेश्चन है, मर्ज सॉर्टेड एरे। तो आपने ये क्वेश्चन देखा अपनी कॉपी, आपने क्वेश्चन का नाम लिखा, देन यू हैव टू लुक फॉर कंस्ट्रेंट्स, क्या कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, लाइक इस पर कंस्ट्रेंट छोटे हैं, तो अगर छोटे हैं तो ब्रूट फोर्स से हो जाएगा, बड़े हैं तो आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच लिखनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, ऐसे आपने उस पर लिखा। देन व्हाट यू आर थिंकिंग आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन देखने के बाद जो भी आपके मन में आ रहा है उसको पॉइंट्स पे लिख लो, किस पे ये लग सकता है, वो लग सकता है। फिर आपने जब ब्रूट फोर्स लिखी, उसके बारे में आपने लिखा कि लाइक वी कैन यूज दिस, नॉट जस्ट द कोड, द थॉट प्रोसेस यू ऑल्सो हैव टू राइट, राइट। एंड बस ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, सो दैट जब आपको याद हो, वापस आपको रिवाइज करना हो, तो फिर आप आराम से कर सको। हाँ, सारे क्वेश्चंस को नहीं लिखना होता है, पैटर्न वाइज लिखना होता है। लेट्स से यू आर स्टडिंग 2 पॉइंटर्स, देन ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो कि पूरे 2 पॉइंटर्स को कवर कर रहे हैं, गॉट दैट। जिससे कि उन उन 4 से 5 क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद आपका पूरा 2 पॉइंटर ही क्लियर हो जाए। सो दैट्स हाउ यू मेक नोट्स। हेलो भाई, हेलो निखिल, हाउ आर यू? हैव यू completed the A to Z sheet of Striver? Not completely, bro. I'm still doing it. Not completely. Okay, so apart from that, we have to. Okay, let's make another loop for int I equals 0, I less than uh, array. Nikhil, I'm good. Your stream dropped into my, what you said? Sorry, into my YT feed. Oh, that's crazy, bro. Like, I'm getting pure viewership. That's crazy. डे 2 क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज तो डे 11 है ना। सर, आई हैव स्टार्टेड लेट, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, बट आई ट्राई टू कवर ऑल डेज विद इन 2 to 3 days। मैं ट्राई करूंगा कि मैं 2-3 दिन में सारा कवर कर लूँ, ऐसा। A to Z करने बैठूंगा 1-2 साल लग जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, एनफ यापिंग, लेट्स ट्राई दिस। मैं तो दिन के 3 क्वेश्चन करके थक जाता हूँ। कॉलेज स्टूडेंट सर, कॉलेज स्टूडेंट। Like I have to put all inside one, inside nums1, or what? But in story nums1, to accommodate this, nums1 has a length of m plus n. कौन सा ईयर? फोर्थ ईयर सर। लाइक नॉट मूविंग टू फोर्थ ईयर। So like we have to declare the size of array, which would be n plus m. So I is less than m plus n, I plus plus. What we will do is nums1
of I equals array of I. Okay, so will this work? Let me see. Far. Okay, okay. The what a blunder. मेरा सेकेंड ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, अब थर्ड ईयर शुरू होगा जुलाई से. बेस्ट ऑफ लक भाई उसके लिए. बाय द वे विच कॉलेज? ओके एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट दिस. Okay, accepted. But this was brute force. Now let's optimize this without using any additional space. Okay, yeah. Optimal version. Okay. So like we have to reduce the extra space. For that, what we can simply do is we have to hmm, PSIT private. Okay, PSIT. हाँ जानता हूँ, मेरे दोस्त पढ़ते हैं PSIT पे by the way. So like what we have to do now is just remove that extra space and do everything in that. Like there is a way, I guess. Let's try that. So first array is 1 2 4 5, and second is uh let's take this 9 and 49 and 53. ऑप्टिमाइज क्यों करना है ब्रो जॉब के लिए? कर लेते हैं भाई, अब क्या है. आप कहाँ से हो, कौन सा कॉलेज, क्या एज है, पूरा इंटरव्यू लूँ. अरे भाई, भाई मैं गाजियाबाद, ABS गाजियाबाद. 2 and 5 and 8 and 9. Okay, so like we, this is sorted, this is also sorted. Okay, now if I compare the last element with the first element, since this is greater, then it should come on the right side. आ गया नेट. भाई जिनका भी पॉज हो रहा हो प्लीज़ एक बार स्ट्रीम को रिलोड कर लो. Okay, okay, so int left equal uh, what will be equal to left m, and right will be equal to 0. Okay, मैं अभी स्ट्रीम सुनते सुनते अपना डे 11 कंप्लीट कर लेता हूँ. कर लो भाई कर लो, मैं भी जल्दी आ जाऊँगा डे 11 पे. आई ट्राई 2 3 दिन में आ जाऊँ. Okay, so now while, like what will be the condition for while loop, since we have, will it be the same or mm, hey, can anyone in the chat please let me know like what should be the condition for while loop? Mm, wait, wait a second. Let me just.
approach. uh, Three pointers. No bro, I'm not using three pointer. मैं नहीं बताऊंगा. Okay bro, let me try itself. Okay, what should I do now? भाई अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना उसे. निखिल भाई प्लीज़ इग्नोर. Bro, let me just close the door. Now it's better, I guess. आपका बच्चा, अरे नहीं भाई. Okay, so like, left equals m or work. Network. Is it fine? What is Java C plus plus? Java किया करो, C plus plus बोरिंग है. नहीं सर, C plus plus is not boring. नहीं है बोरिंग सर. मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? भाई नेटवर्क इशू, आई डोंट नो क्यों लैग हो रहा है इतना. I was thinking of doing this and saw this series will start myself. Experienced engineers here. अच्छा एक बार प्लीज़ मुझको बता दो क्या मेरी आवाज़ आ रही है. मुझे चेक खुद चेक करने दो अपने फ़ोन पे. जस्ट अ सेकेंड. मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे चेक खुद चेक करने दो अपने फ़ोन पे. जस्ट ओके आने लगी. ओके लेट्स गो. लेट्स कंटिन्यू. ओके सो left m right and wait, let me just try that. So we would compare this with this. If there is a difference, uh, then we would just simply swap. All right, then move to next element. Okay, ठीक है. Then next element. Okay, so the condition can be something like while left is greater than equal 0, but for that we have to keep as left equals n minus 1 and right as 0. Okay, and right is less than n or m. I'm doing it right or what? Why are you please? No, not now. Bhai. Loud and clear we can hear. Loud and clear we can hear. That's crazy. Okay, so yeah, left जब तक 0 से बड़ा है और right m से छोटा है.
So left is that part n minus 1. Okay. So if at any point of time, if at any point of time nums1 of left is greater than nums2 of right, then we just have to swap. And what will we swap? Nums1 of left minus minus with nums2 of right plus plus. And yeah, so, and if this is not the case, then we just have to break. That's what I learned from Shriver. So yeah, so this is the case. And is there anything left to do? Are you also from NIT? No, bro, I'm from a tier 3 college. Internship करी कभी? No, not yet, sir. No internship, no job, nothing. Just me and DSA. Okay, so yeah, that's it. Or let's run this. Let's see if it works. Wrong answer. Output 122000. Expected is 1223 by 6. हाँ, कुछ गलती करी क्या मैंने? Nums1 left is greater than nums2 right. Then swap array, लेफ्ट को माइनस माइनस किया एंड राइट को प्लस प्लस किया, एल्स ब्रेक कर दिया. व्हाट इज द एरर? सॉल्विंग केस 2. व्हाट टू डू नाउ? Let's try run on this. Nums one here 1 2 3 0 0 0. Okay, right. We'll this with this. Okay, we'll simply swap. Now what should I do? Should I just sort them again? Like, let's see. Sort. Nay. Can anyone please tell me? Or no, no need to tell me. Let me do it myself. Don't sort. Yes, I'm not sorting. Uh, Let me see what. 3 pointer you can use. Yes, bro. 3 pointer is also a way. But I want to solve this question using this approach. As if I am not wrong, this was also a possible approach. What's wrong in this? I'm not getting.
I equals m minus 1, j equals n minus 1, and k equals m plus n minus 1. Bro, I guess that's the three pointer approach you're talking about. But currently, I'm not thinking about three pointers. Yeah, it is a possible approach, but oh, wait a second. Let me see. Okay. I got. Like I have to sort it. I have to sort it, bro. Like I think because what I'm not doing is I'm not copying it to uh, that nums one array, right? So what I will do here is simply num dot backend uh, nums dot and plus m. All right, and sort nums2 dot backend nums2 dot end plus n. No, we will just copy for int I equals 0, I less than n, I plus plus uh, nums1 of uh, like we have some elements already in nums1, so m plus I equals nums2 of I. So yeah, I guess this should work. फा हो गया ये तो क्रेजी वाला. अरे यार व्हाट आई एम डूइंग इज बेगिन से ही तो करना है, एंड तक क्यों थोड़ी होता है कुछ. विल दिस वर्क? इसमें पीछे से ट्रैवर्स करते हैं दोनों एरे जितना. यस यस एग्जैक्टली रिमेंबर दैट अप्रोच. इसमें पीछे से ट्रैवर्स करते हैं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. लेट मी सी दिस वर्क्स. ओके, आई एम श्योर इट विल get accepted. Fuck, wrong answer. 4 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5. एक स्वैपिंग बच रही है इसमें. ऐसा क्यों? ये क्या एरर आ गया? ऐसा क्यों हो रहा है? नॉट रियली नीडेड पीछे से वैसे. नॉट रियली नीडेड. हाँ लाइक मुझे इतना याद है देर आर टू ऑप्टिमाइजेशन, दोनों ऑप्टिमल अप्रोच हैं. लेफ्ट हमने n माइनस वन से. वेट अ सेकेंड. लेफ्ट n माइनस वन और m माइनस वन. आई गेस m माइनस वन. फॉर nums one left nums two right else break nums one dot begin command begin plus m. अगर आपको यूज सॉर्ट यूज करना है जस्ट कॉपी फ्रॉम सेकेंड एरे एंड सॉर्ट आफ्टर दैट. Copy from second array and sort after that. Okay, okay, I'll do that. But why is this giving correct wrong answer? Should I ask ChatGPT about this or just?
मैं लेफ्ट एम लेफ्ट ज़ीरो, राइट हमारा, या फिर राइट एन तक जाएगा क्या? बस ये तो एक्सपेरिमेंट है, जस्ट आई डोंट नो चलेगा नहीं चलेगा। ब्रो, चल गया क्या? अरे कम ऑन, लेट्स गो। बट लेट मी जस्ट अ सेकेंड, लाइक अगर यहाँ पे मैं एम कर रहा हूँ, सो राइट अपना हुआ यहाँ पर, ओके, ज़ीरो। ओके ओके ओके, मैं उल्टा कर रहा था, मतलब मैं दोनों चीज़ को मिक्स कर रहा था। दैट्स वाई इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। हो गया भाई, फाइनली। क्योमा हून भाई, आपका नाम क्या है ये? KYOUMA। फाइनली ये भी हो गया, मर्ज सॉर्टेड एरे, ऑप्टिमल अप्रोच भी हो गई। नाउ कम्स द डुप्लीकेट नंबर। I'm already exhausted. Let me have a sip of water before moving to next question. अंकित दुबे, गुड लक ब्रो। थैंक यू भाई, आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट। Find the duplicate number. Good. These types of good luck messages definitely motivates me a lot. पंप मिल जाता है भाई। भाई अगर कोई अभी स्ट्रीम देख रहा है तो कैन यू प्लीज लाइक और सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit that like button. Hit that subscribe button. It's just Kioma. Okay, all right. What else are you studying other than DSA for placements, bro? Bro, as of now, I'm doing DSA, and along with DSA, I'm focusing on core subjects like SQL queries हो गई, DBMS, operating system, object oriented programming, etc. And yes, I'm trying to I'm trying my best to build projects as well, because I'm trash in development. Yes, I'm trash in DSA as well, but yeah, dustbin in development, you can say. मैं कैसे लाइक करूं आपको? अरे निखिल भाई, कैन यू प्लीज लाइक द स्ट्रीम, hit the like button on stream and hit that subscribe button. Have a good day bro, keep working hard. Thank you bro, you also keep working hard. Let's get placed as soon as possible. और उस लूप में फंस जाते हैं। Yes. Okay. Find duplicate number. Given an array of integers nums containing n plus 1 integers, all right, where each integer is in the range 1 say n inclusive, all right, there is one repeated number in nums. Return the repeated number. You must solve the problem without modifying the array nums, okay, and using only constant extra space. So we cannot use hash map or frequency, okay. We have to solve it in constant space. So yes, I know, like we have to use fluids algorithm. कितने क्वेश्चन है लीड कोड पे? लीड कोड पे तो 38, लाइक मैंने कितने किए हैं या फिर उस पे कितने हैं? ऑल क्या पूछ रहे हो भाई? लाइक आई एम श्योर यू आर आस्किंग अबाउट मेरे कितने क्वेश्चंस है। यस, सो दीज आर द क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड ऑन लीड कोड, यू कैन सी हियर। टोटल क्वेश्चन 3958 है, जिसमें से 639 सॉल्व किए मैंने। नो ब्रो, डैम मत बोलो भाई। स्टार्टिंग पे जो मैंने जब लीड कोड स्टार्ट किया था ना, आई वाज जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द सॉल्यूशंस। इवन आई वाज नॉट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ब्रो। बहुत देर में मुझको रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग पैटर्न्स एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट यूजिंग AI, चैट जीपीटी इन सबमिटिंग। Okay, so we have to use fast and slow pointer.
This is the only approach I know about this question, but I don't know. Int स्लो, वो तो मैं भी करता हूँ। शुरुआत में हम सब ने ही किया है आई गेस। इंट स्लो इक्वल्स नम्स ऑफ ज़ीरो, इंट फास्ट इक्वल्स नम्स ऑफ ज़ीरो। अगर कोई सोच रहा है कि मैं सोल्यूशन एकदम रट के आया हूँ, नहीं, मेरे को इस क्वेश्चन के बस यही अप्रोच मैंने पहले भी करी थी, एंड अगेन आई एम यूजिंग दैट अप्रोच ओनली। स्ट्रीम क्वालिटी गुड, ओके। वाइल स्लो डज नॉट इक्वल फास्ट, जब तक स्लो फास्ट नहीं मिल हो जाता तब तक स्लो को एक स्टेप बढ़ाना है। स्लो इक्वल्स नम्स ऑफ स्लो। सो या दिस इज हाउ वी यूज फ्लूइड्स एल्गोरिथम ऑन एरेज। लाइक इंग्लिश में बहुत इजी होता है, उसका नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट का नेक्स्ट करते हैं, बट यहाँ पे हमें उस एलिमेंट केथ इंडेक्स पे जाना है। नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं, आई गेस आप समझ रहे होगे। एंड फास्ट को हम करेंगे नम्स ऑफ फास्ट, जिससे कि हमारा फास्ट जो है 2 स्टेप मूव करेगा। सो आफ्टर डूइंग दिस शिट, what we are gonna do is, ओके 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 ओके, स्लो अपना वहाँ पे होगा, फास्ट वहाँ पे होगा, ठीक है। मैं पेन पेपर पे भी करता जा रहा हूँ। इसके बाद व्हाट टू डू, व्हाट, ओके ओके। सो अपने को स्लो तो वहीं पे रखने का है, बट फास्ट को वापस से हम रीसेट कर देंगे नम्स ऑफ ज़ीरो पे। इसके बाद जब तक फास्ट नहीं मिल जाता स्लो से, तब तक हम बढ़ाएंगे एक स्टेप, 1 स्टेप बोथ। सो स्लो इक्वल nums of slow and fast equal nums of fast। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा स्लो जहाँ पे होगा, जो स्लो होगा बस वही हमारा आंसर होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस शुड वर्क, लेट्स सी। ओके, रॉन्ग आंसर, फा। फा नहीं बोला, क्या हो गया? अच्छा, एक रॉन्ग आंसर। 1 2 3 4 2 2 आउटपुट 1 एक्सपेक्टेड 2। ओके 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 ओके। So let's use my, where is my pen? 1 3 4 2 2, then 2 3 4 2। कैन सम हम फास्ट को नम्स ऑफ ज़ीरो करते हैं या फिर स्लो को नम्स ऑफ ज़ीरो करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। लिंक लिस्ट साइकिल कैसे डिटेक्ट करूं? दैट्स एग्जैक्टली, वेट, हाउ टू यूज fast and slow pointers and array in CPP. Okay, let's check. Let. Okay, okay, okay. So here fast equal 0, फास्ट को हम 0 पे सेट कर देंगे। विल दैट बी द करेक्ट? हंसना मत कोई प्लीज़। प्रो कोडिंग बैकएंड है यार, बहुत लैग हो रही है, स्ट्रीम बार बार इरिटेटिंग हो रहा है। भाई मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं स्ट्रीम नहीं करता ना, वाईफाई मेरा एकदम डैम भाई क्या नेट देता है, बट जब मैं स्ट्रीम करने आता हूँ यही मुझे परेशान करता है।
इसमें क्या गलती है? स्ट्राइवर भैया प्लीज हेल्प मी। ऑप्टिमल अप्रोच इन इंग्लिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर फ्यू स्टेप्स स्लो एंड पॉइंट एंड ठीक है। नाउ प्लेस द फास्ट पॉइंटर बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट। जब फास्ट को हमको करना है वहीं पे नम्स ऑफ जीरो पे। साइकिल, ठीक है, साइकिल तो बनेगी। डी के डू क्या लिखा है? डी के मतलब हम्म, यहाँ तक तो ठीक है। वेट अ सेकेंड, while fast does not equal slow और slow does not equal fast। अभी भी गलती आ रही है इसमें। नमस्ते। नमस्ते भाई। अब क्या गलती आ रही है इसमें? उफ, अब क्या गलती आ रही है इसमें? कैन समवन प्लीज लेट मी नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके लेट्स ड्राई रन, बहुत हो गया। ठीक है, स्लो हमारा यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे। जो अगर हमारा स्लो फास्ट के बराबर हो जाता है। आई थॉट आई हैड टू यूज बाइनरी सर्च। विल बी डन बाय जोर, हाँ भाई जोर से तो वो एक लाइन में हो जाता है। आई नो, मैंने उसकी एक रील भी डाली थी। बट इट लेट मी यूज फ्लूइड्स। कहाँ स्ट्राइव भी है, मुझे लगता है कोड देखना पड़ेगा मुझे। फास्ट तो फास्ट सही है, डू दिस ये भी सही है, फास्ट नंबर ऑफ जीरो, वाइल्स तो भाई कोड तो मैंने बिल्कुल सेम लिखा है। एंड व्हाट्स द एरर? डिट्टो सेम कोड है। ब्रो इंट स्लो इक्वल नम जीरो, इंट फास्ट ना डू। मैंने तो पूरा कोड लिख दिया। अच्छा, डू वाइल का कुछ अंतर आ रहा है क्या इसमें? डू वाइल स्लो डज नॉट इक्वल फास्ट, ऐसा कुछ सीन है क्या? हाँ? अरे यार, सॉरी भाई, हंसना मत कोई प्लीज देख के। फक।
इसकी दिक्कत थी। ओके, मतलब एक बार तो करना ही है। ओके ओके, आई गॉट दैट, गॉट इट, गॉट दैट। मतलब जब हम वाइल लूप लगा रहे थे ना, तो वो एक बार भी रन नहीं करता क्योंकि पहले ही वो कंडीशन चेक हो रही थी। बट डू वाइल पे वो एक बार तो ये कंडीशन रन होगी। सभी रीसबमिट करूँ? क्यों भाई, रीसबमिट क्यों करना है? हाँ, और जो लोग कह रहे थे कि इसको बिट मैनिपुलेशन से कर लो, तो या बिट मैनिपुलेशन से भी कर लेंगे। हम अपना आंसर को इनिशियलाइज करेंगे ज़ीरो से, फिर हम पूरे में ट्रैवर्स करेंगे ऑटो 8 इन नम्स, और हम क्या करेंगे, अपने आंसर को, कहाँ गया वो, ये रहा, करते जाएंगे एक्स से, और रिटर्न कर देंगे आंसर को। सो या दिस easy problem, come on understand, come on understand now। अरे भैया, कैसी गलती कर रहा हूँ मैं। हैं? It's 1 o'clock. ये क्या हो रहा है? Guys, please do subscribe for his efforts. Thanks again, Ujjwal. Okay, this approach is not fine because मैंने किया सिंगल नंबर वाली अप्रोच, और ये क्वेश्चन है डुप्लीकेट नंबर का, तो इसके लिए दूसरा है। अब मैं वो दूसरा करने नहीं जा रहा। आई गेस किसी ने कहा था बाइनरी सर्च का कुछ। हाँ हाँ भाई, प्रो कोडिंग बैकएंड एग्जैक्टली भाई, जैसा आपने कहा। वो जो मैंने कोड लिखा अभी जोर का, वो था सिंगल नंबर के लिए, मेरे को एकदम दिमाग से निकल गया। और इस कोड के लिए हमको बाइनरी सर्च यूज़ करना पड़ेगा, एंड सिंस आई एम नॉट दैट गुड इन बेट मैनिपुलेशन, सो आई वुड लव टू अवॉइड दैट अप्रोच, एंड विल मूव ऑन विद दिस अप्रोच। ऑल राइट। हाँ तो क्या भैया, अच्छा तुम भी हो गए क्या अनकॉमेंट? तो जो कह रहा समझाओ। तो समझाऊंगा तो मैं नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि फ्लूइड सेल्गो इसमें इसलिए वर्क करेगी क्योंकि हमारा स्लो पॉइंटर एक स्टेप मूव करेगा, फास्ट पॉइंटर दो स्टेप मूव करेगा। तो एक ना एक पॉइंट पे वो लोग मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहाँ पे हम रुक जा करके अपने फास्ट को वापस से शुरू कर देंगे, और फिर फास्ट को स्लो की तरफ एक एक स्टेप बढ़ाएंगे। फिर जिस भी पॉइंट पे वो मिलते हैं वही हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो दो बार आ रहा होगा। क्योंकि इसके पीछे जो डेरिवेशन होता है उसमें हम, मेरे को जितना बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, बट जितना याद है, हम एक्स लेते हैं, एक्स माइनस ए लेते हैं, फिर एक एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो जो डिस्टेंस निकलती है वो वही निकलती है। कुछ तो ऐसा था, मेरे को बिल्कुल अप्रोच के लिए मत पूछो भाई। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? प्लीज़ भैया स्पैम मत करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। निखिल भाई, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो डुप्लीकेट नंबर ऑल्सो डन, और मुझे लग रहा है मेरा आज का हो गया है। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है।
सो आई थिंक आई शुड एंड द स्ट्रीम एंड निखिल भाई आई विल सून। अभी तो कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ, फिर पार्ट थ्री। ओके, फिर पार्ट फोर है, इसमें टू सम थ्री सम फोर सम करना है। देन कुछ स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन, देन लिंक लिस्ट, एंड देन लिंक लिस्ट पार्ट टू। आई गेस बहुत पीछे हूँ अभी मैं। आई गेस बहुत पीछे हूँ मैं अभी। तो क्या मुझे अभी और करना चाहिए, या फिर आई शुड जस्ट एंड द स्ट्रीम? एक पोल कहाँ से डालते हैं इस पे? पोल कहाँ से डालते हैं भाई? यहाँ से। हाँ। शुड आई एंड द स्ट्रीम और सॉल्व फर्दर? एंड दिस। सॉल्व। चलो भाई। बट मेरा स्ट्रीम हेल्थ ना बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। फाइंड द रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर, इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ? बट यहाँ पे तो एक्सटर्नल लिंक दी ही नहीं है, इसकी भी दी नहीं है। सब लोग कह रहे हैं लेट्स एंड द पोल नाउ। You are given M cross N matrix with the following two properties. Each row is sorted in non-decreasing order. It means ascending order. Please, bro, write ascending order. Don't write non-decreasing order. The first integer of each row is greater than the largest integer of previous row. First integer of each row. This is greater than last integer. ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है. All right. Given an integer target, return true if target is in matrix. If the target is in matrix, we have to return true. All right. The brute force would be simply traversing the matrix, and if at any point of time we get the element, we would return true, else return false. But यहाँ पे लिखा हुआ you must write a solution in log mn. Bro, don't do this. Let's try solve it using brute force itself. Maybe, maybe. For int I equals 0, I less than matrix dot size I plus plus. For int j equals 0, j less than matrix of 0 dot size, and then j plus plus. And then if at any point of time matrix of I j equals अरे target, we would return true. Return false. Please, I don't want to listen fa on this question.
ओके सबमिट। नमस्ते भाई, आप फिर आ गए। मत करो सर, प्लीज़। प्लीज़ डोंट स्पैम। सर प्लीज़ डोंट स्पैम। कैसे करते हैं इनको ब्लॉक वगैरह, कैसे करते हैं भाई? कैसे करते हैं बैन भाई, कोई बताओ मुझे। ओके, टाइम आउट इज सेट फॉर 24 आवर्स। ठीक है, कर दिया, मैंने कर दिया। ओके। अच्छा। फक, ये तो एक्सेप्ट हो गया ब्रूट फोर्स में ही। बट वी विल नॉट consider this submitted until we solve it using optimal approach. Now we have to solve it log mn, means we have to binary search, क्योंकि ये लाइक सॉर्टेड है। तो इस पे अपन लगाएंगे बाइनरी सर्च। भाई मैं कहीं गलती करूँ तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन का कोड ना मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता सही से। ठीक है। स्पेशली निखिल सर, गॉड, गोट, गोटेड हो आप प्लीज़। चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट, नहीं, इंट एन इक्वल्स मैट्रिक्स डॉट साइज, ये आपका रो हो गया। और एम आपका कॉलम होगा, जो कि होगा मैट्रिक्स ऑफ लिस्ट डॉट साइज, so that we don't have to write every time this long. So इसमें भी अपन लो डिफाइन करेंगे, इंट लो इक्वल 0 एंड हाई इक्वल, what will be the high for this question? What will be the high? हाई क्या होगा इस क्वेश्चन का? एम इंटू एन। सॉरी ब्रो, अगेन एक्सट्रीमली सॉरी। जो भी स्ट्रीम पे है उसको दिक्कत हो रही है ना नेटवर्क की, बस 2-3 दिन और होगी, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा तो वहाँ का नेटवर्क ऐसा इशू नहीं देगा। चलो, लेट्स मूव। मुझे तो अब ये इजी लग रहा है। वाइल लो लेस देन इक्वल हाई, अगर लो तुम्हारा है तो हम क्या करेंगे, पहले इंट मिड निकालेंगे, जो कि होगा लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। ऑल राइट। एंड इफ, बट हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे? किसी की नो डेटा अगेन। ओके, तो इसको करने के लिए ओके, इफ मैट्रिक्स आई, ये क्या होगा यहाँ पे?
लेट्स से अपन करेंगे पहले कंपेयर चार चार से, मतलब कि रो मिड बाई रो। तो यहाँ पे होगा, अरे अरे, मिड बाई रो। और यहाँ पे कॉलम अपनी क्या होगी, केम बैक। थैंक यू। क्या होगा यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये हमारा होगा, कॉलम अपना होगा यहाँ पे दूसरा मिड बाई एम। हम जस्ट, ये तो बस हिडन ट्रायल है। अगर ये इक्वल टू होता है टारगेट के, देन वी वुड रिटर्न ट्रू। एल्स इफ, एक सेकेंड, एक यहाँ पे बनाएंगे इंट वैल्यू जिसको हम डाल देंगे ये। तो यहाँ पे हम कर देंगे अगर ऐसा है, एल्स इफ, अगर आपकी वैल्यू जो है वो छोटी है आपके टारगेट से, तो हम क्या कर देंगे, अपने लो को कर देंगे मिड प्लस वन। ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो एल्स हाई को कर देंगे मिड माइनस वन, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फॉल्स से फा नहीं होना चाहिए प्लीज। हाई रॉन्ग, फा हो गया। हाई रॉन्ग, हाई एम इंटू एन नहीं होगा। हाई को रखा है एन इंटू एम माइनस वन। ब्रो कैन यू प्लीज लेट मी नो लाइक वाई माइनस वन? इट्स गिविंग रॉन्ग आंसर। डब्लू मिड प्लस वन, एल्स हाई मिड। अरे ये तो हो गया, वाई इट्स लाइक, उस पर तो कोई वैल्यू भी नहीं है, ट्रू फॉल्स है, तो मैं इसको डिबग कैसे करूँ? Because programming languages use zero-based indexing. The index positions for those elements ranges from 0 to total elements minus 1. How can I forget this basic shit? Why? Will this work? Okay. मुझे लग रहा है कि यहाँ गलती है, मैंने वैल्यू गलत रखी हुई है। Wait. How to find a value in matrix for searching in CPP? Let me see this. अरे show more. Okay. अरे नहीं, रो होता है मिड बाई कॉलम, और कॉलम होता है मिड मॉड्यूलो कॉलम। मॉड्यूलो आपको कॉलम देता है। ठीक है, अच्छा ऐसा करके देखते हैं एक बार, लेट मी सी। यहाँ पे भी मॉड्यूलो कॉलम, और यहाँ पे भी एम होगा। ओके, लेट्स गो इफ दिस वर्क्स। सही, चलो एक नई चीज़ सीखने को मिली। मतलब मैट्रिक्स में अगर अब बाइनरी सर्च लगा रहे हो तो मिड को जब हम कॉलम से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है रो। आपके वाईफाई की तो
एम रियली सॉरी फॉर द नेट इशू भाई, बट लेट मी क्लियरली टेल यू, बस 2 दिन की और बात है, जैसे घर जाऊंगा तो फिर वहाँ वाईफाई दिक्कत नहीं करेगा, कांस्टेंट एक्सेलेंट नेटवर्क रहेगा, ठीक है। मतलब मिड को जब हम एम से डिवाइड करेंगे कॉलम से तो आपको रो मिलेगी, और मॉडलो करने पे ये वो देखो कैसे, लेट्स से यहाँ पे अपना मिड निकल के आ रहा है। ओके, 3, 11, 16, ठीक है, 20, क्यों उस दिन बाइनरी सर्च ट्राई करो, हो गया सर। सी, बाइनरी सर्च ही तो है ये, इजंट इट। सो अपना सर्च इन 2D मैट्रिक्स भी हो गया है। लेट्स, like power of x, and I have already done, but I'll resolve this because मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिसॉल्व किए हैं। सो या I'll resolve it। मुझको पानी चाहिए, बहुत गर्मी है। आप भी पानी पी लो निखिल सर, और क्यों सर। ओके, implementing power of action which calculates return power of x n। No bro, I'm not doing this। सर मत बोलो भाई, क्यों नहीं भाई, विराट कोहली कहते हैं जब आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जस्ट लाइक द ऑस्ट्रेलियंस। वो ये हमको इम्प्लीमेंट ही करना है, मैंने डायरेक्ट उसको रिटर्न ही करवा दिया, ठीक है। अच्छा निखिल, आपने कॉन्टेस्ट दिया था लीड कोड का, जो वीकली बाई वीकली हुआ था? X2.0। अरे एक हेल्प कर दो, हाँ जी बोलिए सर। क्या बोल रहे थे निखिल आपने, इतना सुन के लैग हो गया। आपने कॉन्टेस्ट दिया था लीड कोड का, वीकली और बाई वीकली दोनों? प्री कोडिंग बैक एंड ब्रो, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ आप ऐसे कोड मत लिखो सोल्यूशन पे, लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, है ना। अगर मुझे कुछ डाउट होगा देन आई वुड डेफिनेटली आस्क यू, लेट मी हैंडल दिस फर्स्ट। ओके, सो इसको अपने को बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले डबल आंसर इक्वल्स 1।
ये आंसर को हमने 1 किया। ठीक है, तो जब तक आपका n ग्रेटर देन 0 है तब तक what we simply do, you can't solve such a easy problem। भाई मैं बोल तो रहा हूँ मुझको नहीं आता डीएसए, अगर आता होता तो फिर कैसी बात कर रहे हो भाई आप। मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ करने का, क्वेश्चन है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अगर आपका n मॉड्यूलो टू 1 है मतलब ऑड है तो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल्स x कर देंगे। उसने कैन सॉल्व बोला, अच्छा, अरे सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी प्री कोडिंग बैकएंड, यू कैन सॉल्व सच इजी। हाँ मैं भाई ऐसे कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेट में से होता ही नहीं होता। और उसके बाद हम अपने क्या करेंगे, एन को माइनस इक्वल कर देंगे 1 से, सिंपल। एंड इफ वो इवन है देन वी वुड, फिर हम क्या करेंगे, लाइक टू की पावर 4। सो फक भाई मैं इतनी ईजी भी नहीं कर पा रहा। ओके ओके ओके, तो हम x इक्वल टू कर देंगे x इंटू एक्स। ठीक है, x को हमने कर दिया x इंटू एक्स, ठीक है। इसके बाद n को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी समझ में आ गया। और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे आंसर। विल दिस वर्क? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, 2 टेस्ट केस पास हो गए, कुछ तो गलती है। अच्छा, n इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, सो इफ n लेस देन 0, अगर हमारा n नेगेटिव है, स्ट्रीम क्वालिटी अभी तो गुड है, चलो एक्सीलेंट। अगर हमारा 0 है तो फिर हम अपनी पावर को कर देंगे रेसिप्रोकल, और अपने n को कर देंगे नहीं बट, हाँ मुझे लगता है मुझे यहाँ पे अभी n को दूसरे में स्टोर करना पड़ेगा क्या।